Good morning, students. Good morning, sir. So today's topic is chemical energy storage. In this category, we use two types of carrier. One is called hydrogen, and another is synthetic natural gas. That means we can store energy in the form, say, hydrogen gas, or we can say we store electric energy in hydrogen storage system in the form of chemical energy, and we can also use the synthetic natural gas. This synthetic natural gas contains methane, hydrogen, carbon dioxide, and carbon monoxide. You can say this is basically a mixture of gas. So first, uh, studies how to or you say how we will produce the hydrogen gas. So what is the procedure, or you can say what is the procedure by which we can produce the hydrogen? Can anyone tell me what is the procedure by which we can produce hydrogen? Then we see how we store the energy in hydrogen. Nitesh, Priti, Deepak. Electrolysis, sir. Good. Electrolysis, by the processor electrolysis. And what we do in electrolysis process? Tell me, what we do? Deepak, Yes, sir. tell me what we do in electrolysis process. Electrolysis process do with the help of two rod, anode and cathode in a solution of sodium hydroxide Sodium hydroxide. with the help of power source or electricity. Now, the but electrolysis is basically acidic nature. We can use dilute H2SO4 as electrolysis material, or say electrolysis, in which we put two electrode, one is positive, another is negative, and in this process, though the solution is diluted, that means it contains more water than the acidic, or say the in this solution there are more water than the H2SO. In this process, if we put two electrode, one is positive and another is negative, and if we flow a current in between, say in these two electrode, what will happen? The H2, actually H2O, that means the water, break into hydrogen and oxygen. Though the hydrogen is basically positive charge and the oxygen is negative charge,
So the hydrogen ion are attracted by the negative plate and the oxygen are attracted by positive plate, and then the hydrogen ion are the hydrogen ion forms the hydrogen gas, and it will flow, or you can say we can collect this hydrogen and we can store this hydrogen. But in case of oxygen, we do not store the oxygen. We mainly release this oxygen in air. But if we need that, then we can store. So see that how actually the electrolysis process will going on. The water particle break into hydrogen and oxygen. Then the hydrogen ion took the electron from the negative plate and create or say form hydrogen gas. And in anode, the oxygen release the electron and form oxygen. So by this electrolysis process, we create hydrogen gas, and this hydrogen gas is collect, or we can store this hydrogen gas for further use. So after producing the hydrogen gas, we have to store hydrogen. We can store the hydrogen as in gas form, as in liquid form, or in metal hydride form. We can store the hydrogen gas in gas form directly, or in liquid form, and in metal hydride form. Which one is, or say, what is the difficulties? Can you say, Deepak? Can you tell me what is the difficulties if we basically store the hydrogen in liquid form? Deepak, Pritesh, Neon, Priti, can you guess what are the and what is the basically difficulties if we store the hydrogen in liquid form? Pritesh, Deepak, गेस करो क्या होगा, कौन सा प्रॉब्लम होगा लिक्विड फॉर्म में प्लेस करने के लिए? Am I audible? Yes, sir. Okay. So can you tell me
what are the difficulties, may say, for liquid form if we store the hydrogen gas? What are the difficulties to store the hydrogen in liquid form? Guess. यस सर, इट्स कॉस्ट इफेक्टिव, ये कॉस्टली हो जाएगा। कॉस्टली हो और जाएगा। गैस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने में थोड़ा सा इसमें डिफिकल्टी होता है, कॉस्ट इफेक्टिव है। So you were saying that the cost of that process is विल more than the gas form. यस And Deepak say something. No, sir. Don't want to add any point. Preeti, Preeti. So we can easily say that there is basically three form by which we can store the hydrogen. One is in form of gas, another is liquid, and another is metal hydride. In gas form, basically the problem is the volume of the hydrogen gas is so high that we need a large storage system, or say large tank system. So this is basically the main disadvantages of gas form. We need large tank, or you can say we need large storage system. And the disadvantages, or say the problem of in liquid form, we have to maintain a low temperature. To maintain the low temperature, there is such we have to create such a system which is basically costly. Ritesh, have you understood? यस सर, We have to maintain a low temperature in liquid form. We convert the hydrogen in gaseous form to liquid form by extracting temperature, and after यस सर, that we have to maintain that temperature, because the boiling point of hydrogen gas is 20 Kelvin only. That means if we convert that 20 Kelvin in, say, degree Celsius, what is the value of that? The boiling point of hydrogen gas is 20 Kelvin. So what is the temperature in Celsius scale? Ritesh, Deepak, यस, tell me. 290, What is the value of 0 degree Kelvin in Celsius? Is minus 273. The 0 degree Kelvin is equal to minus 273 degree Celsius. So tell me, what is the value of degree Celsius of 20 Kelvin? Ritesh, Ritesh, it's you can put unmute yourself. There is no issue. Ritesh, यस सर। tell me, what is the value? If you keep yourself unmute, tell me what is the value of 20 degree Kelvin in Celsius?
The value of 0 degree Kelvin is minus 273 degrees Celsius. So how much? 20 Kelvin. 20 Kelvin. We have to maintain the temperature of 20 Kelvin to liquefy the hydrogen, because the boiling point of hydrogen is 20 Kelvin. So 293. 293. Why? So 0 degree Kelvin, Is equal to minus 2 23 is equal to degree minus centigrade. 273, and 270 degree centigrade. the value of 0 degree Kelvin is equal to minus 273 degrees Celsius. So what is the value of 20 Kelvin? minus 253.1 degrees Celsius. That means we have to maintain the temperature of minus 250 degree Celsius. So it is a quite tough job to maintain that, Yes, sir. temperature. So we basically prefer the metal hydride form. We basically prefer the metal hydride form. In metal hydride form, actually magnesium nickel, in with magnesium nickel, the hydrogen gas reacts and become magnesium nickel hydride and produce heat. In that equation we can see magnesium nickel, it react with hydrogen and produce magnesium nickel hydride and heat, and by this method we can store the hydrogen in metal hydride form. And how we actually get the hydrogen back? It is Hydrogen bank. back. That means we put hydrogen in metal hydride form, but we have to get back the hydrogen, otherwise we cannot say get the energy which we actually put on hydrogen. Actually, say in less peak demand situation, we convert the electricity in chemical energy form, which is basically stored in hydrogen, and this hydrogen is stored as metal hydride form. Have you understood? It is what is actually the process. First, what we do, we take the electric energy or convert it into DC. By this DC electricity, we produce hydrogen, and this hydrogen is stored as metal hydride, and the metal hydride by the, or say, we store the metal, we store hydrogen in metal hydride, but we have to convert again this energy into the electrical energy. हमें इस एनर्जी को फिर तो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना है. हम तो हाइड्रोजन को स्टोर कर दिया. We can store, or we actually store the hydrogen in metal hydride form, but we have to get back the energy. वो कैसे होगा? Metal hydride convert into electrical energy. What is the procedure? हमने प्रोसीड्योर कैसे बताया? जो इलेक्ट्रिसिटी को मेटाइल हाइड्राइड में कन्वर्ट करने का प्रोसीड्योर बोल दिया. फर्स्ट एसी को डीसी में कन्वर्ट करेंगे. डीसी से वहां से फिर हाइड्रोजन जनरेट प्रोड्यूस होगा. वहां से फिर हाइड्रोजन से
आपको उसको स्टोर करेंगे वो हम गैसियस फॉर्म में कर सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में कर सकते हैं और मेटल हाइड्राइड फॉर्म में कर सकते हैं। तो हमने मेटल हाइड्राइड फॉर्म में कर दिया क्योंकि ये थोड़ा सा आसान है। इसमें जब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम मेटल में नहीं हाइड्रेट, लगेगा। और और जब पीक डिमांड आएगा तो फिर वहां हाँ, से गैस फॉर्म को इलेक्ट्रिकल फॉर्म कर देंगे। हाँ कैसे करेंगे? यस सर। कैसे करेंगे वही पूछा है। सर डीसी से हम लोग हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर लिए। हाँ, कर लिया। तो फिर उसके बाद क्या किया? मेटाइल हाइड्राइड कर दिया। अब वो हाँ, स्टोर हो गया। एंड वो व्हेन द मेटल पीक हाइड्राइड डिमांड ही इज मेरा कमिंग। स्टोर रहेगा ना हाँ, हाइड्रोजन गैस का स्टोर हो फॉर्म। गया। मैं बोल रहा हूँ कि हाइड्रोजन स्टोर हो गया। अब क्या करेंगे? जब पीक डिमांड आएगा, एट द टाइम ऑफ पीक डिमांड, व्हाट वी डू, what we should do, कन्वर्ट। we have to release the hydrogen from metal hydride. We have to release the hydrogen gas from metal hydride. Can you tell me by which process we can extract the hydrogen from metal hydride? If you carefully see the equation or say the reaction, you can easily say how you actually get back the hydrogen. उस इक्वेशन को ठीक से देखो तो फिर बोल सकते हो कैसे हम हाइड्रोजन को रिलीज कर सकते हैं मेटल हाइड्राइड से। हितेश, दीपक, बाय हीट, बाय बाय हीटिंग। by heating. Good. If we heat or say if we heated the metal hydride, it break into the metal and hydrogen. That means magnesium nickel hydride break into magnesium nickel and hydrogen. And by after getting this hydrogen, we react the hydrogen with oxygen and it produce water and heat. And by this heat, we produce steam, or you can use also a gas turbine by the from that hydrogen gas, or say by the help of that hydrogen gas, you convert this chemical energy into mechanical energy. Then from the mechanical energy to electric energy, we have to use a alternator. By the help of alternator, we can convert that mechanical energy into electric energy. समझ में आया दीपक? दीपक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. एक बार बोलो क्या कर रहे हैं हम लोग? क्या कर रहे हैं बोलो ना। हाउ? हम लोग जो मेटल हाइड्राइड को है उसको हीट दे करके हाइड्रोजन को अलग करेंगे, हाँ, और फिर? वो हाइड्रोजन से स्टीम जनरेट होगा हाँ, जो कि टरबाइन को रोटेट करेगा। हाँ, उस टरबाइन से अल्टरनेटर के मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। उस टरबाइन से हम अगर एक अल्टरनेटर कनेक्ट कर देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है? ओके। Then the next topic is synthetic natural gas. See that figure from fossil fuel or wind turbine or say from wind generating station or photovoltaic station. When the less demand is there or say at the time of off peak demand, we convert
the electric energy into hydrogen, and there are some station by which we get actually carbon dioxide. There are so many basically industries where we produce carbon dioxide, and we took that carbon dioxide from that, say from that plant, and convert we have to convert this carbon dioxide and hydrogen into methane. We have to convert this carbon dioxide and this we have to convert that carbon dioxide into methane with the help of hydrogen. And the synthetic natural gas plant are situated near to the carbon dioxide plant, and where the wind power or say the photovoltaic plant are present. Actually we uh, say we uh, create a plant of synthetic natural gas in front of, say, the plant where the carbon dioxide gas is produced and the electricity are produced. हम वो नेचुरल सिंथेटिक और से सिंथेटिक नेचुरल गैस का प्लांट हम कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट पे प्रोड्यूसर है उसके नज़दीक और जो इलेक्ट्रिसिटी जहाँ भी मिलता है उसके नज़दीक ही बनाएंगे। आया समझ में रितेश दीपक? Yes, sir. क्या करते हैं हम सिंथेटिक नेचुरल गैस में? क्या करते हैं, हमको कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन से मीथेन गैस बनाना है। इन सिंथेटिक नेचुरल गैस or say in synthetic natural gas plant we have to convert the carbon dioxide gas and hydrogen into methane। आया समझ में क्या कर रहे हैं हम रितेश? यस सर। और कहाँ ये प्लांट डिजाइन करेंगे? इस प्लांट को कहाँ डिजाइन करेंगे? किसके नज़दीक? जनरेशन के नजदीक। जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है और इलेक्ट्रिसिटी भी वहाँ जहाँ अवेलेबल है, लेकिन हाइड्रोजन प्लांट के आसपास नहीं करेंगे क्योंकि हाइड्रोजन को हमें ट्रांसपोर्ट करना है। वी कैन ट्रांसपोर्ट द हाइड्रोजन in gaseous form or in liquid form or in metal hydride form. After transporting the hydrogen gas, and we take the hydrogen gas with the help of carbon dioxide, we produce synthetic natural gas। उसमें क्या हो रहा है, and the process by which we produce the methane is called methanation process। इसमें क्या कर रहे हैं हम, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन को अगर रिएक्शन कराएंगे तो मीथेन प्रोड्यूस होगा और वाटर प्रोड्यूस होगा, और उससे क्या है, हीट एब्जॉर्ब होगा, मतलब हमें हीट देना है। दिस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक प्रोसेस। because heat is absorbed by this process, so this process is called endothermic। और जहां हीट प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और हम अगर एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रेजेंट होता है, उसके साथ अगर हाइड्रोजन को रिएक्शन करेंगे तो मीथेन प्रोड्यूस होगा एंड वाटर प्रोड्यूस होगा, उसमें भी हीट एब्जॉर्ब होगा।
बोलो रितेश, मिथेनेशन प्रोसेस समझ में आया कि नहीं? दीपक, Yes, sir. क्या कर यस रहे सर। हैं हम? कोई एक बोलो, क्या कर रहे हैं मिथेनेशन प्रोसेस में? What we actually do in methanation process? तो कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ ऐड कर रहे हैं तो मीथेन और वाटर मॉलिक्यूल मिल रहा है। प्रोड्यूस हो रहा है और उसमें हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। That's why this process is called endothermic process. और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसमें थोड़ा सा कार्बन मोनोऑक्साइड भी रहता है, प्रेजेंट रहता है ना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। Am I audible now? रितेश, यस सर। अब बोलो क्या हो रहा है, present में बोलो। वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिक्स रहता है ना। कार्बन यस डाइऑक्साइड के सर। साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी थोड़ा सा रहता है। कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, उसके साथ भी अगर हाइड्रोजन को हम रिएक्शन कराएंगे तो मीथेन प्रोड्यूस होगा और वाटर। वाटर प्रोड्यूस होगा और हीट हमें देना है। एक्चुअली क्या है हुआ है वो जो मतलब ये देखिए ये जो रिएक्शन हो रहा है इसमें क्या है वो हीट एब्जॉर्ब करके रख रहा है। अगर हम इस मीथेन गैस को बर्न करेंगे तो क्या होगा? मीथेन गैस इनफ्लेमेबल है कि नहीं? दीपक, मीथेन गैस इनफ्लेमेबल और नॉट? Yes, sir. Fulema. रितेश, यस सर। is the methane gas is inflammable or not? Is the methane gas is inflammable or not? Do you इनफ्लेमेबल। ever heard the alea? Have you heard व्हाट सर? alea? आलेया का नाम सुना है कभी? क्या होता है जहाँ मान लीजिए एक पॉन्ड है वहाँ पर बहुत प्लांट था जो एक्चुअली उसमें थोड़ा सा वो क्या कहते हैं उसे, मान लीजिए बहुत दिन से अगर एक पॉन्ड ना यूज नहीं हो रहा है तो क्या होगा वहाँ पर? वो जो प्लांट है वो सब क्या होगा? बहुत दिन अगर कोई तालाब मान लीजिए यूज नहीं हो रहा है, वो बेकार हो जाएगा, दलदल हो जाएगा सर। दलदल होगा, फिर उसमें क्या होगा? पॉल्यूशन फैलेगा। एक्चुअली क्या है उसमें वो देखना है वहाँ पर एक्चुअली मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है। वो जो दलदल जब हो जाएगा उसके बाद वहाँ पर मीथेन गैस फॉर्म होना शुरू हो जाएगा।
और कभी कभी वो दिन में तो दिखाई नहीं देता, रात में जब वो मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है, वो जब एयर के टच में आता है, जब एयर के साथ मिक्सता है, तब वो थोड़ा सा लाइट और थोड़ा सा आग लग जाता है, इसीलिए उसमें थोड़ा सा लाइट दिखता है, उसे कहते हैं आलेया। आया समझ में? समझ में आया? Yes, sir. तो मतलब वो जो आलया होता है, मतलब वो मीथेन गैस अगर इफ यू रिएक्ट विद द नॉर्मल एयर, इफ यू रिएक्ट द मीथेन गैस विथ नॉर्मल एयर, इट प्रोड्यूस हीट। वो यूं ही जल जाएगा, जलने के बाद वो हीट प्रोड्यूस कर देगा। सो हाउ वी गेट बैक द इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम दैट केमिकल एनर्जी, और से दैट काइंड ऑफ केमिकल एनर्जी, हम तो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को अभी सिंथेटिक गैस में कन्वर्ट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। अब उसे उससे कैसे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी पाएंगे नितेश? मान लीजिए हमें जब वो ऑफ पीक डिमांड था तब किया किया हम तब इलेक्ट्रिसिटी से हम हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर दिया, उस हाइड्रोजन को कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्ट करने के बाद हम मीथेन फॉर्म कर दिया। दैट मीन्स वी स्टोर द इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। हम मीथेन में केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को। अब कैसे हमें दोबारा एक्चुअली निकालना है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? सर इसको नहीं बाय हीटिंग से इसको डिकम्पोज नहीं कर सकते? नहीं, डिकम्पोज नहीं कर सकते, ये इनफ्लेमेबल है। मीथेन गैस इज एन इनफ्लेमेबल गैस, हाइड्रोजन इज आल्सो इनफ्लेमेबल गैस। जला दो तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में फॉर्म कर जाएगा और वाटर भी आ जाएगा। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दो मीथेन को, कार्बन डाइऑक्साइड फिर फॉर्म कर जाएगा और H2O क्रिएट हो जाएगा। उससे क्या होगा, उससे हीट प्रोड्यूस होगा, उस हीट से हम स्टीम जनरेट करेंगे, फिर स्टीम टरबाइन से हम इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं ना रितेश? इसमें सर Yes, sir. ऑक्सीजन से इसको रिएक्ट कराना होगा ना? किसके साथ? केमिकल एनर्जी से अगेन हम लोग इलेक्ट्रिकल में अगर कन्वर्ट करेंगे हाँ तो स्टोर, तो मेरा वहाँ पे मीथेन है तो उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमको वाटर मिलेगा हाँ, और और हीट हीट भी प्रोड्यूस होगा। हीट भी जनरेट करेंगे। और उस हीट से हम लोग टरबाइन को रोटेट करेंगे, देन अल्टरनेटर रहेगा। नहीं, हीट से तो टरबाइन को जनरेट नहीं, रोटेट नहीं कर सकते, आप नहीं स्टीम नहीं क्रिएट हीट, करना। स्टीम से हाँ, सॉरी उस हीट स्टीम से से। आप स्टीम क्रिएट कर लीजिए, हाँ बॉयलर में उस हीट को दे दीजिए, वो तो स्टीम हो जाएगा। हीट स्टीम से। And you can also use that methane gas in gas turbine. Actually there are some gas turbine also available, गैस टर्बाइन में भी अवेलेबल है। उससे क्या करते हैं हम, अगर वहां पर मान लीजिए मीथेन को दे दिया ना, तो वो क्या किया, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बहुत वॉल्यूम क्रिएट कर देगा और प्रेशर भी क्रिएट करेगा। उस प्रेशर से हम टरबाइन को घुमा के ऑल्टरनेट के हेल्प लेके, ऑल्टरनेटर के हेल्प लेके हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। आया समझ में रितेश, दीपक? दीपक समझ में आया? Yes, sir. ओके।
So that's basically what we studied today. We have studied the chemical s- energy storage system. Basically, there are two types of carrier which are used as chemical energy storage. One is hydrogen, another is synthetic natural gas. With the help of hydrogen and this synthetic natural gas, we basically convert, or say we can store the electric energy into chemical energy, or in the form of chemical energy we store the electric energy, or say excess electric energy in the form of chemical energy, and by that chemical energy we can easily convert into the electric energy when the peak demand is came. At the time of peak demand we can release, or we can convert that chemical energy into electric energy, by which we can solve the peak demand. Okay, Preeti, Ritesh and Deepak, these three people are today's class, present in today's class. Okay, that's all for today. You may leave. Thank you, sir.